Good evening, ladies and gentlemen. Let me welcome all my viewers once again today on Beyond Sugar platform. Beyond Sugar, as you all know, is created for all of you so that you get right scientific information to manage your health in a good way. Beyond Sugar has been created in scientific collaboration with RSSDI and Indian Society of Nephrology so that we can provide you accurate and scientifically reliable information. March month is observed globally as something related to kidney, and especially today's day, 14th of March, is observed as the World Kidney Day. And it is our endeavor that we spread information and the right awareness. And today, I am very glad to welcome Dr. Sanjeev Gulati for this live interaction. So, welcome to the show. Thank you, Mr. Mehra. How are you? Very good, sir. Thank you for joining us live. We will today talk about how do we live. Our viewers can learn from you living healthy with the chronic kidney disease. We'll take in the questions also of our audiences. But इससे पहले कि हम आपके सवाल लेना शुरू करें, let me formally introduce Dr. Gulati to all of you. He is a well-known luminary in the field of nephrology. Currently, Professor Gulati is Principal Director in Department of Nephrology and Renal Transplant at Fortis Group of Hospitals in New Delhi. He has been serving the community for last 3 decades, almost his patients. He has previously been associated with McMaster University at Canada, where he was associate professor for pediatric nephrology, and he has also been associated as additional professor at SGPGI Lucknow, where he was instrumental in setting up one of the country's largest programs on dialysis and renal transplant. Not only about the patient care, but he is also an avid academician. He has 130 research publications in national and international journals, including of the repute of New England Journal of Medicine. And also, he has been writing textbook chapters as well in the books for his fellow physicians. He has been the president of Indian Society of Nephrology earlier, and no one better than him today to host on the World Kidney Day. And he's also been actively involved in Organ Transplant Society as well, very actively and helping his colleagues and patients. Sir, let me welcome you on the stage and hand it over to you for your opening remarks. कि आज के दिन आप क्या बताना चाहेंगे हमारे पेशेंट्स को हमारे व्यूअर्स को on the relevance of World Kidney Day, and also you can highlight in your beginning remarks what's the vital importance and the functions kidney performs. Namaskar, good evening, and thank you, Sanjeev ji, for inviting me here and giving me a chance to share my thoughts on World Kidney Day. तो वर्ल्ड किडनी डे सारी दुनिया में मनाया जाता है so that we can focus the attention of the community as well as the policymakers and the governments on the epidemic of kidney disease that we are all going through. जो किडनी की बीमारी है बहुत तेजी से बढ़ रही है all over the world, and unlike heart disease and cancers which are now coming down because of public awareness, screening, new treatments, किडनी की बीमारी अभी भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है और आने वाले सालों में जो डेटा है वो इट सेज दैट इट्स गोइंग टू बी फिफ्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ. और हमारी अपनी कंट्री का ही डेटा अगर हम आपसे शेयर करें, जिसमें हम लोगों ने लास्ट ईयर एक स्टडी की थी वेयर एस्ट्राजेनेका वाज वेरी काइंडली इन्वॉल्व्ड इन हेल्पिंग अस कंडक्ट दिस स्टडी. स्क्रीनिंग प्रोग्राम किया था ऑल ओवर द country in different zones, partnering with the primary care physicians, looking at trying to look at it was a pilot study or a sample size. We looked at over 40,000 patients जिन लोगों में हमने प्रोटीन चेक किया, यूरिन प्रोटीन लीकेज चेक किया, and the results were very surprising and shocking, and it showed that the prevalence of kidney disease is likely to be in the range of about 30%. The earlier figures we were talking about 15 to 20%. तो ये बहुत तेजी से बढ़ रही है, which is not surprising considering कि the top 3 causes of kidney disease, diabetes or hypertension,
बोथ ऑफ दीज आर लाइफस्टाइल, बोथ ऑफ दीज आर इंक्रीजिंग। अब आने वाले सालों में हम लोग वर्ल्ड डायबिटिक कैपिटल बनाने जा रहे हैं। इट्स नथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ, but it highlights that all of us need to work together, need to get our act together, so that we can, you know, save the kidneys and prevent kidney disease. तो फॉर द अनइनिशिएटेड, हमारे बॉडी में दो किडनीज होती हैं, जिसे गुर्दा भी बोला जाता है। और ये चाहे आप सोएं या जागे, 24 घंटे, सातों दिन, 365 दिन काम करती हैं। आप जो सिर्फ खाना खाते हैं, उसमें से जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बनते हैं वो निकालती हैं, और जो ज़्यादा पानी पीते हैं उसको बैलेंस आउट करती हैं। इसके साथ साथ, जो बहुत लोग नहीं जानते, एक बड़ा क्रिटिकल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी मेंटेन करती हैं, जिसमें बहुत सारे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस। तो एक उनको इक्विवेलेंस में रिटेन करना है, ना ज़्यादा ना कम। ब्लड फॉर्मेशन में किडनीज का रोल है, ग्रोथ में किडनीज का रोल है, और बोन हेल्थ में भी किडनीज का रोल है। तो एक मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फेसेटेड ऑर्गन है, और इसीलिए अगर ये डैमेज होता है तो इट लिटरली इफेक्ट्स ईच एंड एवरी अदर ऑर्गन इन द बॉडी. The unfortunate part is it's silent in the early stages. Uh, with this, I will hand over the mic back to Sanjay Mehra ji to take us through as to, what are the implications of kidney disease and other issues, and any other questions that you might have. या थैंक यू डॉक्टर गुलाटी, आपने सर में शुरू में बताया कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ किडनी एंड ऑल्सो यू टोल्ड अस दैट व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ वर्ल्ड किडनी डे एंड व्हाट ऑल यू एम टू अचीव ऑन दिस डे। सर आपने ये भी बताया कि काफ़ी सारे पेशेंट्स अफेक्ट होते हैं किडनी डिजीज से आजकल ड्यू टू वेरियस रीजंस। But let me start, this conversation with let's talk about healthy patients first. A normal person who is, working well, he is leading a happy life, and probably his kidneys are also doing good. So, what should be he doing to ensure that he maintains a good kidney health for a long time? I think this is where the focus should be. It's a very important question. हम लोगों ने ये there's an age old adage that prevention is better than cure. And for the vast majority, I think the preventive aspects need to be highlighted. So पहले तो मैं ये कहूँगा कि you should treat your kidneys like diamonds. Diamonds once damaged cannot be restored. तो इसीलिए किडनीज का भी यही रूल है कि आप किडनीज को प्रोटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि एक बार डैमेज हो गई, एक बार क्रॉनिक किडनी डिजीज सेट इन हो गई, देयर इज एन इनएडवेरेंट प्रोग्रेशन, यानी वो बढ़ती ही जाती है। वो एक बार क्रेटिनिन बढ़ना शुरू होगा, ईजीएफआर कम होना शुरू होगा। हम लोग आज की डेट में उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। वी कांट सेट द क्लॉक बैक, वी कांट रिवर्स इट। तो कैसे बचें किडनी डिजीज से? आई थिंक दिस इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन or billion dollar question, because the US is currently spending about $100 billion a year on dialysis and transplant. और हमारे देश के लिए ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, because you know this is beyond the reach of the vast majority of patient population. तो इसके लिए मैं आपको 7 golden rules बताने जाऊंगा, जो आप अगर meticulously follow करेंगे, I can assure you that you will stay free of kidney disease and probably some other diseases also. तो पहला क्या है? पहला है कि आप अपना शुगर पीरियडिकली चेक करें, और अगर आपकी डायबिटीज है, so then tight control of diabetes, because it is during the early phases of diabetes that the kidney starts getting damaged, where we don't take diabetes seriously, and the day we start taking it seriously, it becomes too late. The day damage is already set in. So at least once a year or more often if you have family history of diabetes. Number 2 पे blood pressure अपना check करते रहें, और blood pressure should be targeted to normal. Normal का मतलब होता है 120/80, और बाकी सब formulas I think they are no longer true. The research has shown that 120/80 is a normal blood pressure to target. नंबर 3 पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक धूम्रपान, स्मोकिंग से दूर रहें। स्मोकिंग ज़्यादातर लोग हार्ट और लंग्स से एसोसिएट करते हैं, बट बहुत रिसर्च आ चुकी है कि स्मोकिंग ऑल्सो पुट्स अ प्रेशर ऑन द किडनीज एंड डैमेजेस किडनीज।
more so if you have diabetes, more so if you have high blood pressure. नंबर चार बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रग्स, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड किडनी डैमेज विच इज टोटली प्रिवेंटेबल, यानी हम सेल्फ मेडिकेशन से दूर रहें। और जो हमारे एक्सपीरियंस में कॉमन मेडिकेशन है जो किडनी को डैमेज करती हैं, एंड वी सी दिस डे इन एंड डे आउट, नंबर वन पे आ जाती है पेन किलर्स, नंबर टू पे आती है एसिडी ड्रग्स, ओमेप्रोजोल, पेंटोप्रोजोल, और इसके साथ साथ बहुत तेजी से जो बढ़ रहा है वो है यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस। यू नो, कोई पर्टिकुलर तो ब्रांडिंग है, हो यूनानी, आयुर्वेदिक, ब्रॉड ग्रुप में, और हमारे पास ऐसे बायोप्सी प्रूवन केसेस हैं जिसमें डैमेज हमने प्रूव किया है। तो माय मैसेज टू इज कि यूज ओनली साइंटिफिकली वैलिडेटेड एंड टेस्टेड थेरेपीज बाय एक्सपर्ट्स। डोंट ट्रस्ट योर हेल्थ ऑन हेयर से मेजर, ऑन सोशल मीडिया पे कोई देख लिया तो उसको उसको अपने आप पे एक्सपेरिमेंट मत करें। जो भी दवाइयाँ हम लोग हम ये हमारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यूज़ करते हैं, एलोपैथी, इट हैज़ बीन ट्राइड आउट इन एनिमल्स फर्स्ट। एनिमल ट्रायल्स होते हैं, हेल्दी वॉलंटियर्स पे ट्रायल्स होते हैं, पेशेंट्स पे ट्रायल्स होते हैं, फिर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं, पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज होती हैं। तो दे आर, कोई भी दवाई जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इट हैज़ टू गो थ्रू दिस फेज 4 ट्रायल्स बिफोर इट शुड बी लाइसेंस। तो ये तो सभी के लिए, तो कोई भी सिस्टम ऑफ थेरेपी हो, ये उनके लिए भी उतना ही लागू है, क्योंकि वी आर डीलिंग विद ह्यूमन लाइफ विच इज़ वेरी प्रेशियस। सो लुक फॉर ट्रायल्स, लुक फॉर एविडेंस। तो नंबर 5 पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपनी डाइट अच्छी रखें। आजकल का लाइफस्टाइल बहुत फास्ट हो गया है, बट समटाइम्स इट्स बेटर टू स्लो डाउन। आप अपने लिए टाइम निकालें। अक्सर ये होता है कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, बीच में ही वी ग्रैब सम लंच विच इज़ ऑफन फास्ट फूड, अ बर्गर, पिज़्ज़ा, बिकॉज इट वेरी क्विक। घर पर आते हैं, लेट आए, आते आते रास्ते में से जो भी आपको मिला फास्ट फूड चेन, उसमें से एक ले लिया पिज़्ज़ा। तो दिस सॉर्ट ऑफ अनहेल्दी फूड शुड बी अवॉइडेड। एंड हम अपने जो हमारी इंडियन डाइट है, इट इज कंसिडर्ड टू बी अमंग द हेल्दीएस्ट। आई स्टे अवे फ्रॉम दिस व्हाट वी कॉल प्रिजर्व्ड फूड्स, उसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश सैलेड्स खाएं, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, नट्स खाएं, डेयरी प्रोडक्ट्स लो फैट लीजिए, नमक कम इस्तेमाल करें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन डाइट, बिकॉज हम लोग नमक बहुत ज़्यादा है। नमक और ब्लड प्रेशर का सीधा ताल्लुक है। नेक्स्ट मैं आपको कहूँगा कि इसके साथ साथ make sure you spare some time for yourself daily and do some exercise or yoga, so that you don't get into excessive weight gain, क्योंकि ज़्यादा वजन होना एक बीमारी का प्रिकर्सर है। दोनों डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर से, वेट से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। और भी किडनी की बीमारियां हैं जो डायरेक्टली, एफएसजीएस नाम की एक बीमारी है जो वेट से कोरिलेट करती है। तो है, do exercise regularly, something which is not there in our culture. And I remember uh, when I was in Canada, people are very religious about their exercises. तो मंदिर चाहे ना जाएं, चाहे चर्च ना जाएं, लेकिन अपने जिम, अपने एक्सरसाइज जरूर करेंगे। खाना, इट्स एज रेगुलर एज देयर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। And last but not the least, and perhaps very important, is invest in an annual health checkup, which is वो एक शॉट में आपकी बड़ी सारी बीमारियां स्क्रीन कर लेते हैं। एंड आई वुड से कि डू इट ऑन योर बर्थडे एंड गिव योरसेल्फ द गिफ्ट ऑफ लाइफ, एज वी कॉल इट। सो एनुअल हेल्थ चेकअप, 7 स्टेप्स अगर ये आप करेंगे तो लॉट ऑफ डिजीजेस से आप बच सकेंगे, जिसमें किडनी डिजीज भी एक है। जी, शुक्रिया डॉक्टर गुलाटी। आई थिंक डॉक्टर गुलाटी ने एक पूरा का पूरा जो है, इनफैक्ट ही हैज कवर्ड ऑल these 7 things in sharing with you for a healthy kidney. If you are a healthy individual, I mean, don't wait for something to go wrong. Follow these things and probably आप हमेशा एक अच्छी किडनी हेल्थ के साथ रह सकेंगे। But sir, unfortunately, all of us want to be healthy, remain healthy, but still, some diseases will set in. And today, we are talking about chronic kidney disease, and I think it is extremely important as a first thing, if I can learn from you, for my viewers.
that are there any specific group of people who need to be more cautious, who may be at a higher risk of getting chronic kidney disease, so that they can be more cautious and careful? Sure. So अगर जो लोग डायबिटिक्स है, as I said, diabetes is the commonest cause of kidney disease worldwide, including our country. और ये हमारी रिसर्च थी 1999 में. We were among the first people in country when I was a researcher at संजय गांधी पीजीआई. हमने ये कर रिसर्च में हमने बताया कि डायबिटीज हमारी कंट्री में भी, जो एट दैट टाइम इट वाज कंसिडर्ड रिच मैन्स डिजीज, रिच कंट्रीज डिजीज, तो इट इज बिकम, लोगों ने इनिशियली माना नहीं, और बट अब सब्सिक्वेंट स्टडीज फ्रॉम डिफरेंट सेंटर्स हैव क्लियरली वैलिडेटेड दैट. तो डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत चौकन्ने रहना है. नंबर टू, हाई ब्लड प्रेशर्स को चौकन्ना रहना है. फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज है, अगेन these are high risk patients. If you are overweight, obese, again you are at high risk. If you have kidney stones, you are again at high risk. If you have heart disease, again heart and kidney are very close. तो उसमें भी आपको थोड़ा सा विजिलेंस, अपने आप के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है कि कहीं आपको किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है. दीज आर दी एंड एज योर एज एडवांसेस, the kidneys also take a toll. They get weaker. The chronic kidney disease has a direct correlation with the age also. So जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो you also have to be a bit more cautious. Okay. So I think the message is very simple and very clear from Dr. Gulati that अगर आपको ये risk factors हैं जो बताए उन्होंने, so you need to be more cautious and be more careful. Sir, how can someone who is having these risk factors now, how can he be self-aware? Are there any signs or symptoms, early signs or symptoms which someone can self-identify to understand that maybe his kidney health is deteriorating and he needs to meet a doctor? So पहली बात तो ये है कि किडनी डिजीज के आंकड़े देखें तो ज्यादातर पेशेंट्स, मैं इंडियन सोसाइटी नेफ्रोलॉजी जिसका मैं प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, हम लोगों ने एक अपनी रजिस्ट्री बनाई जिसमें मैं एनालाइज किया कि डॉक्टर्स के पास पेशेंट कब आ रहा है. तो वी फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर कमिंग टू अस लेट, स्टेज 4 स्टेज 5 किडनी डिजीज. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि किडनी डिजीज इज अ साइलेंट किलर. स्टेज 1, स्टेज 2 एंड अर्ली स्टेज 3 बिल्कुल कोई लक्षण नहीं होते, तो साइलेंट किलर रहता है. तो अगर आपको अर्ली डिजीज पकड़नी है तो आपके पास स्क्रीनिंग करने के अलावा कोई और तरीका नहीं है किडनी डिजीज पकड़ने का. यानी सिंपल टेस्ट लाइक यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट आप करा लें तो उससे किडनी की डिजीज का डायग्नोज हो जाएगा. फिर भी आप अगर लक्षण से, तो आप कुछ लक्षण हैं जो अगर आप में हो तो जरूर आप किडनी की, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो लोग सोचते हैं कि ब्लड प्रेशर एज रिलेटेड है या मेरी फैमिली में ब्लड प्रेशर था, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर इज समटाइम्स द ओनली साइन ऑफ किडनी डिजीज, स्पेशली इन यंग. 35 साल से कम ब्लड प्रेशर है तो किडनी डिजीज का लक्षण है, हो सकता है. नंबर 2, अगर Okay. यूरिन में झाग आ रहा है, फ्रॉथ आ रही है, सो दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबल साइन कि आपकी किडनीज में प्रोटीन लीकेज हो रहा है. यूरिन में ब्लड आ रहा है तो वो आप, ज्यादातर लोग आ ही जाते हैं हमारे पास. अगर यूरिनेशन बहुत ज्यादा आ रहा है, लोग सोचते हैं मेरी किडनी बहुत अच्छी काम कर रही है, ऐसा नहीं है. किडनी का एक फंक्शन होता है कंसंट्रेशन कैपेसिटी, यानी जितना भी हम पानी पिए वो रीअब्सॉर्ब कर लेती है और बहुत कम यूरिन पास करती है. सम, जैसे मान लीजिए 1.5-2 लीटर तक. लेकिन अर्ली साइन ऑफ किडनी डिजीज में लॉस ऑफ कंसंट्रेशन कैपेसिटी होता है, तो यानी आपका यूरिनेशन बढ़ जाएगा और लेटर स्टेजेस में कम होता है, वो भी एक साइन है किडनी डिजीज का. भूख कम लगना, वॉमिटिंग होना, ये कई बीमारियों में होते हैं, लिवर के में भी हो जाते हैं, किडनी में भी होते हैं. शरीर पे सूजन आना, डेफिनेटली किडनी डिजीज लेट आते हैं लेकिन ये, और हीमोग्लोबिन कम होना, आई थिंक ये एक लॉट ऑफ टाइम्स वी हैव फाउंड कि आपका कॉज है. लोग सोचते हैं हीमोग्लोबिन कम है, आयरन खा लीजिए, लेकिन पहले चेक तो करेंगे वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से है या नहीं. और खासकर अगर आपका हीमोग्लोबिन इंप्रूव नहीं हो रहा है, जिसे कहते हैं रेजिस्टेंट एनीमिया, अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया, तो जरूर किडनी डिजीज को चेक करें. और बच्चों में जो हमारे से ग्रोथ फेलियर, ग्रोथ नहीं हो रही बच्चे की. आज ही एक बच्चा हमने देखा जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी और उनकी फैमिली लेके आई एंड दे वर आल्सो शॉक्ड टू फाइंड आउट द कॉज वाज किडनी डिजीज. तो ये एक समरी में सम ऑफ द सिम्टम्स हैं. बट अगेन, अगर आपको किडनी की डिजीज को अर्ली स्टेज में डायग्नोज करना है तो यू हैव टू डू टेस्ट, नॉट लुक फॉर सिम्टम्स. Okay.
सो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंटली टोल्ड बाय हिम, आप सबने सुना, लक्षण बताए डॉक्टर गुलाटी ने हमें कि किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, मगर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब तक लक्षण आएंगे आपको तब तक हो सकता है काफी किडनी का डैमेज हो चुका हो, तो इसलिए आप लक्षण का इंतजार ना करें और ठीक समय पर स्क्रीनिंग कराएं, समय टू टाइम। सर, ये स्क्रीनिंग आपने पहले भी एम्फेसाइज किया, अर्ली डिटेक्शन स्क्रीनिंग के बारे में, तो ये किस एज में स्क्रीनिंग करनी चाहिए किसी हेल्दी इंडिविजुअल को, या फिर जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं, आप थोड़ा गाइड कर पाएंगे हमें, और किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये स्क्रीनिंग करनी चाहिए? राइट। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, बिकॉज स्क्रीनिंग इज ऑल्सो एक्सपेंसिव, बट स्टिल इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स। तो अब शुरुआत से ही बताऊंगा। आप अगर उनमें ही प्री नेटल अल्ट्रासाउंड्स में ही कई बार हमें शक पड़ जाता है कि किडनी छोटी है, मदर की एमनियोटिक फ्लूइड कम है, तो ऐसे में, या बच्चा स्मॉल फॉर वेट पैदा होता है, तो वो भी उनकी भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। फिर स्कूल एंट्री पे ये जापानीज मॉडल रहा है, एंड दे हैव शोन कि स्कूल एंट्री पे सब बच्चों की एक बेसलाइन स्क्रीनिंग हो जाए, फिर स्कूल एग्जिट पे एक बार हो जाए। इसके बाद जो हम सजेस्ट करते हैं कि एज अगर ये सब आपने क्लियर कर लिया है, तो एज मोर देन 40 years, देन उसके बाद तो हर एक साल आपको अपना चेकअप कराना चाहिए। देन जैसे जैसे मैंने बोला, अगर डायबिटिक्स है, हाइपरटेंशन है, किडनी स्टोन है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज है, ओवरवेट है, तो दिस अगेन रिक्वायर दिस दे शुड बी स्क्रीन। और स्क्रीनिंग के लिए कोई बहुत महंगे टेस्ट नहीं है, एक सिंपल यूरिन टेस्ट, एक ब्लड टेस्ट चाहिए। जी, ओके। सो आप जैसे बताया सर ने कि किस समय पर स्क्रीनिंग करनी चाहिए, और अगर आप 40 साल की एज अगर क्रॉस कर रहे हैं तो हर साल स्क्रीनिंग जरूर करनी चाहिए। सर, अब अगर स्क्रीनिंग की और जैसे आपने बताया जो सिंपल टेस्ट है, अब उसमें अगर कुछ आपकी किडनी के अंदर किसी के कोई दिक्कत निकल आई, एबनॉर्मलिटीज निकल आई, सो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? जनरली क्या होता है कि ये पेशेंट्स जनरली दे वुड बी देयर विद देयर फैमिली फिजिशियन, अगर वो अपनी डायबिटीज का या हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, so should they continue? Would they get proper care with their physician, or should they be connecting with the nephrologist? What is the advice on this from you? तो एक तो अपने फैमिली फिजिशियन से पूछे। एक टेस्ट पे तो हम, जैसे अगर एक टेस्ट आपका खराब होता है, वी ऑलवेज से कि उसको थोड़े दिनों बाद एक बार रिपीट करके देख लो, बिकॉज द टेस्ट आल्सो हैव देयर ओन लिमिटेशन। और गो टू योर फिजिशियन, फैमिली फिजिशियन फर्स्ट, डेफिनेटली, टू लुक एट ऑल द अदर फैक्टर्स। बट आई थिंक वन विजिट टू अ नेफ्रोलॉजिस्ट इनिशियली, कि किडनी डिजीज है भी या नहीं है, जस्ट फॉर कंफर्मेशन, वो ज़रूरी है। देयर आफ्टर जो भी हम ट्रीटमेंट प्लान सेट करके आपको वापस आपके प्राइमरी फिजिशियन के पास भेज देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ किडनी डिजीज। जैसे स्टेज 1, स्टेज 2 में कोई आ जाता है, हम कहते हैं साल में एक बार आ जाइए। हाँ, स्टेज 3 ए में आएगा तो हम साल में 2 बार बुलाते हैं, स्टेज 3 बी में आए तो साल में 3 बार 4 बार, जैसे जैसे स्टेज एडवांस होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट्स अब बढ़ जाती हैं। So it's a partnership essentially between the family physician and the kidney specialist. But the moment a doubt is created, it has to be confirmed, verified by an expert who's a nephrologist. जी। तो सर, अगर पेशेंट ने अपने फैमिली फिजिशियन से, एंड देन ही टेक्स एडवाइस फ्रॉम हिज नेफ्रोलॉजिस्ट एज वेल, और जैसा कि आपने बताया पहले कि इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज, वो धीरे धीरे बढ़ेगी भी, तो ऐसे में what are the kind of treatment approaches which you have for your patients? Can you medically manage that patient, या फिर मतलब पेशेंट्स को डायलिसिस वगैरह कराना पड़ता है? सो किस स्टेज के ऊपर आप उसको मेडिकली मैनेज कर पाते हैं, और किस समय पर जाके उसको जो है बाकी इंटरवेंशंस की जरूरत पड़ती है? So today in 2024, there is a lot we can do with patients of chronic kidney disease, and the earlier the diagnosis, the better the outcome is. So we can add years to life and life to years of these patients. आज से 30 साल पहले जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया था, हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ नहीं थी, एंड इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग ऑल्सो क्रॉनिक किडनी डिजीज को ट्रीट करना। और उस समय पेशेंट कहता था हम आ भी गए तो आपने क्या कर लिया, एंड लॉट ऑफ टाइम दे वर ट्रू ऑल्सो, बिकॉज एक तो आते लेट थे और उसके बाद हमारे पास भी ज़्यादा। बट टुडे
लास्ट 3 डिकेड्स में बहुत सारे ऐसी न्यू मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, और स्पेशली अगर हम अर्ली स्टेज पे पकड़ेंगे, स्टेज 1 स्टेज 2 पे, बहुत ड्रामेटिक चेंज आ सकता है आपकी लाइफ में, prolonged. I have patients who I have been following now for 30 years with kidney disease. अभी भी वो स्टेज 5 पे नहीं पहुंचे, तो डायलिसिस तो स्टेज 5 पे करते हैं, स्टेज 5 पे डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट, these are the two options. बट स्टेज 1 to स्टेज 4 पे मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ chronic kidney disease के लिए now there are lot of options, lot of therapeutic interventions out there. ओके, सो विच मीन्स दैट इफ अ पेशेंट इज आइडेंटिफाई, अगर वो अपनी डिजीज को जल्दी आइडेंटिफाई कर ले स्क्रीनिंग के माध्यम से, तो मतलब ही नीड नॉट बी एडमिटेड और अंडरगो Not प्रोसीजर्स at लाइक all. डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। उनका डॉक्टर उन्हें मेडिकल मैनेजमेंट से मैनेज कर सकते हैं उनको। Now, sir, a patient is, let's say, taken care through you with the medical management, but still, some patients will progress towards dialysis as well. And then there are a lot of, things which people want to understand about dialysis, that how safe it is, किस frequency पे करना चाहिए, what is the ease of doing it, कितने साल तक किसी की life can be maintained on the dialysis. So patients and people generally they want to understand these things. Can you help us on this as well? So dialysis इन वेरी सिंपल वर्ड्स इज आर्टिफिशियल किडनी सपोर्ट। जब आपका किडनी फंक्शन 15% से नीचे आ जाता है, तो एट सम पॉइंट यू विल हैव टू, देयर आर ओनली 2 ट्रीटमेंट्स दैट कैन अलाउ यू टू लिव। एक डायलिसिस है और दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट है। इसके अलावा कोई भी ट्रीटमेंट जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, इट इज अनसाइंटिफिक, अनवैलिडेटेड, अनटेस्टेड, and to my experience nothing has ever worked. As you know, experience worldwide with leading kidney experts, it's not that I am telling you this, all over the world, और यही आज की डेट में ट्रीटमेंट अवेलेबल है, डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। अब हम डायलिसिस की बात करेंगे। डायलिसिस से लोग जब भी हम बोलते हैं तो पेशेंट बहुत घबरा जाता है, स्ट्रेस में आ जाते हैं, और अक्सर वो दूसरा डॉक्टर बदल देते हैं, या फिर वो एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी विच अपीयर्स वेरी अपीलिंग, इजी भी है, सस्ती भी है, और आई कैन पुट इट दैट लेस स्ट्रेसफुल है, बट नथिंग वर्क्स, लेट मी श्योर यू। तो आप अपना टाइम पैसा वेस्ट कर रहे हैं और अपनी किडनी बॉडी को और वीक कर रहे हैं। तो डायलिसिस वेरी सिंपल वर्ड्स रिमूव्स द एक्सेस टॉक्सिन्स, एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी। जो किडनी के दो मैंने इंपॉर्टेंट फंक्शन बताए, साथ साथ थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी रिस्टोर कर देता है। Dialysis has to be done 2 to 3 times a week, and this will be decided by your nephrologist. ज़्यादातर पेशेंट्स को 3 times a week होता है, शुरू में 2 times करते हैं। This is blood dialysis. There's an alternate form of dialysis called water dialysis, peritoneal dialysis बोलते हैं उसे हम। उसको हमें डेली करना पड़ता है, लेकिन वो एडवांटेज है कि वो आप घर पे कर सकते हैं, आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आप डायलिसिस आज की डेट में इजीली हो जाता है, और आप हॉस्पिटल में भी करवा सकते हैं और घर में भी कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर गुलाटी ने हमें बताया। एंड देन यू डोंट नीड टू बी हैविंग एनी मिथ्स और एनी डाउट्स इन योर माइंड। एंड ऑल्सो इधर अपने डॉक्टर की एडवाइस लें आप, और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन और इन किसी और सोशल मीडिया और ये सुनी सुनाई बातों पर ना जाएं, क्योंकि ना ही तो उससे ज्यादा हेल्प होगी और उल्टा उससे नुकसान भी आपको हो सकते हैं। Sir, since we are running out of time, I'll take 2, 3 more questions only. But before I proceed on to the next question, there's one of our viewers who has probably written his situation. Mr. Bhanu Pratap, he has written, I think, the long detail about his. If you can read through, and if anything you would like to comment on this. Where is that? Chat. It Okay. is showing up. I think you'll have to read it for me if Okay, time so comes. this is like quite long. So he mentions that I have a kidney problem, CKD stage 4, creatinine levels 3.4. My posterior urethral valve PUV surgery was done in 98 and BNI surgery in 2013. His age is surprisingly 29 years completed, and USG report, both kidneys small in size and both kidney. I think it's a pretty long report which he has written in case. Chronic kidney disease है आपको, I think it's kidney disease are very complex. हर एक इंसान के पैरामीटर्स कोई one size fits all या one treatment for all तो नहीं होती है. So I would suggest कि spend time
विद योर नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी डॉक्टर के पास जाएं, अपॉइंटमेंट लेके, एंड उससे ट्रेन, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन स्टेज 4। सो आने वाला समय थोड़ा मुश्किल होने वाला है, और कितना हम उसको डिले कर सकते हैं, लेट अस सी। जी। सो भानु प्रताप जी, आप मिलें अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से और आप उनसे डिस्कस करें रिपोर्ट, और आई एम श्योर ही वुड बी एबल टू गिव यू गुड solution to it. Sir, you have helped us understand about the dialysis as well, that it is easy to do, and people who develop kidney disease, they can very well be managed on dialysis as well for a long duration of time. Now, there are a lot of discussions and things we hear about kidney transplants also. Can you help us understand that कि आप किस स्टेज में जाके किडनी ट्रांसप्लांट किसी पेशेंट को रिकमेंड करते हैं? हाउ safe is a kidney transplant today, for both for donor as well as the receiver, and anything specific you like to guide on this generally, on this topic? तो स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज के लिए डायलिसिस और ट्रांसप्लांट दो ऑप्शन हैं, और इसमें ट्रांसप्लांट इज बेटर देन डायलिसिस इन ऑल एस्पेक्ट्स। एंड on this occasion of World Kidney Day, I think I have written a couple of articles, given interviews on this aspect, which is often misunderstood. There are you can Why is transplant better? Because सर्वाइवल्स आर बेटर। पहले तो आउटकम्स, यानी 5 साल बाद अगर हम डायलिसिस के सर्वाइवल्स ले लें तो 20% है, जबकि ट्रांसप्लांट के सर्वाइवल्स आर एनीवेयर बिटवीन 80 to 90%, जिसमें 80% की तो किडनी भी ठीक काम कर रही होती है, 5-10% ऐसे होते हैं जिनका क्रेडलिन थोड़ा दोबारा बढ़ जाता है। ये तो हम सर्वाइवल्स की बात हो गई। कॉस्ट की बात हो जाए, बिकॉज इसमें बहुत सारे मिथ्स हैं, तो जितना आप साल भर में डायलिसिस पे खर्चा करेंगे उतने में ही ट्रांसप्लांट हो जाएगा। मोस्ट packages are 6 to 7 lakhs for, but it is a one-time expense. Then the quality of life, transplant transforms life. From a sick person, you become a healthy person. From a person who's dependent on his family for all the treatment, you become independent. आप अपने लिए भी कमा सकते हैं और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं, and we have several examples. It also allows you to lead your life in a full and holistic manner. यानी हमारे पास बहुत ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपनी स्टडीज कंप्लीट करी, जिनकी मैरिज हुई, जिनकी फैमिलीज शुरू हुई, and they are useful members of the society, and their mental health also. Studies have compared the mental health of patients, the sexual health of patients, dialysis versus transplant. So in all these aspects, transplant scores over dialysis. Ji. A lot of patients who undergo chronic kidney disease and they have to go through this whole journey, they face a lot of emotional setbacks also, a lot of psychological setbacks as well. हालांकि डॉक्टर गुलाटी ने जिस तरीके से बताया जो मैं पूरा, इट सीम्स आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ देम विल बी reassured that there is nothing to be worried about. But still, sir, do you encounter such things in your day-to-day practice, and how do you counsel, and what's your guidance to people in such situation? So I think this in day-to-day practice, CKD is the commonest kidney disease that we see, or we try, to counsel them from our own experience as well as from experience of other patients. And now there are kidney support groups available in the country also, which offer a lot of guidance, counseling, support. And Kidney Warrior Foundation का मैं एक नाम लेना चाहूँगा। आई थिंक जो भी किडनी पेशेंट देख रहा है इस हमारे सेशन को, दे शुड बिकम अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और आपके बारे में दे हैव रेगुलर सेशंस, वेदर इट इज डाइट, इट इज मेंटल हेल्थ, इट इज ट्रीटमेंट, all aspects of kidney disease. And they also been able to raise funds and support, uh, offer some limited financial support to patients with kidney disease. Okay, that's very nice, and I think if you connect with such self-help groups where you have people like who are undergoing similar situation which you are, I'm sure a lot of help comes from there as well. So Yeah. finally, I'll just ask you one question, that since you are a specialized person in managing the pediatric renal issues as well. So not many have heard about it. So if I may ask this question to you, that what kind of kidney related problems can come in children, which they can face, and is there anything which parents should be watch out for, and in their children?
सो डेवलपमेंटल abnormalities ऑफ द किडनी यूरिनरी ट्रैक्ट, जिसे एक शॉर्ट में काकूट बोलते हैं, कंजेनिटल एनॉमलीज ऑफ द किडनी यूरिनरी ट्रैक्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। फिर कुछ हेरिडिटरी डिजीजेस होती हैं बच्चों में, वो मैनिफेस्ट हो जाती हैं। कुछ रिकरेंट इन्फेक्शंस की वजह से, किडनी स्टोन्स की वजह से जो बच्चों में किडनी डैमेज होता है। और पेरेंट्स के लिए यही एक बड़ा सिंपल वो है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे शुड बी गुड प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड्स, जिसमें हमें काफ़ी हद तक किडनी हेल्थ का भी आइडिया लग जाता है। और जैसे अभी वो भानु प्रताप जी का केस आपने बताया, तो आई थिंक ही हैड एन abnormality कॉल्ड posterior wall which is a development abnormality, और इसको हम आज की डेट में जब बच्चा पेट में होता है उसी समय प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ताकि अर्ली इंटरवेंशन करें, जिससे काफ़ी हद तक ये डैमेज से बच सकते हैं। Ji, ji. All right. So I think with this, I see that we have covered, with the help of Dr. Gulati, every aspect which a person should be aware of to have a good kidney health. We started by with the healthy people, like, what they should be taking care of to have a healthy kidney throughout. And Dr. Gulati talked about those 7 rules, and he talked about that treat your kidneys as precious diamonds and follow those 7 rules. And I think then he one by one answered other aspects also related to chronic kidney disease. So I think I must thank here Dr. Gulati to you. आपने इस पूरे सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया, पेशेंट्स को, हमारे व्यूअर्स को आपने रीअश्योर किया और कॉन्फिडेंस दिया दैट they can live happily and they can live a healthy life even with the kidney disease. But before I say goodbye to everyone and to all my viewers, I'll once again, give it back to you that Sid, if you want to, summarize the today's discussion, or if there are any important things which we missed to highlight, if you want to emphasize that. आई थिंक पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया, प्रोटेक्ट सेव योरसेल्फ फ्रॉम किडनी डिजीज। अगर आपको किडनी डिजीज के हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, गेट योरसेल्फ स्क्रीन फॉर किडनी डिजीज सो दैट अर्ली पहुँचे अपने डॉक्टर के पास। जितनी जल्दी पहुँचेंगे उतना अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं। इट्स द सिनेरियो हैज़ चेंज्ड, वी कैन डू अ लॉट मोर। और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं शायद जो आज हम नहीं कवर कर पाए होंगे, इसके लिए हमने अपना यूट्यूब चैनल भी मैंने शुरू किया हुआ है टू गाइड पीपल। इट इज़ कॉल्ड डॉक्टर संजीव गुलाटी किडनी क्लिनिक। आप उसमें जाएं, उसमें हर एक एस्पेक्ट, चाहे वो डायलिसिस, ट्रांसप्लांट हो, या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो, या प्रिवेंटिंग किडनी डिजीज़ हो, उस पर भी मैंने काफ़ी इंफॉर्मेशन दे रखी है। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, आई थिंक दैट शुड बी द मैसेज, and cheaper than cure. That should be the message for today. All right. So prevention is better than cure. Not only better, but cheaper than cure as well. I know that Dr. Gulati has been very, very passionate, not only in teaching his fellow physicians, but also for patient awareness, patient well-being. Please do go and check out his YouTube channel. आज हमने कोशिश की किडनी डिजीज के सारे एस्पेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा टच करने की और एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन बनाने की आप सबके लिए। बट अगर आप इन सब चीज़ों में अगर आप फर्दर अगर डीपर डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हैं, सो आई एम श्योर डॉक्टर गुलाटीज यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेशन पोस्टेड देयर इज वेरी वेरी यूजफुल. If you live anywhere in Delhi or North India, you want to hear more, you want to understand more, or if you have any kidney problem, you can always meet Dr. Gulati at Fortis Group of Hospitals at Delhi. And in case you are away in some other city, please do reach out to your doctor immediately without wasting any time if you have any symptoms or risk factors जो डॉक्टर गुलाटी ने हमें बताया आज. So with this, I'll thank all my viewers who joined us live today or who would be watching this program later on as well. And thank you, Dr. Gulati, for joining us on World Kidney Day and and making all of us aware and wiser about good kidney health. Thank you so very Thank much you. and good. Thank you, Sanjeev ji. I think that was an excellent program, and thank you for inviting me here and giving me a chance to share my thoughts. धन्यवाद और शुभ रात्रि. Bye bye. Good night. Thank you.